part, in this figure, we can see that this is a shingle way shear in which we are applying forces in. I mean, the forces are acting only on one plane or on one face, which is parallel to this bolt. And secondly, in this is a type of a or an example of a double shear in which the shear forces are applying on two different planes on a same bolt. So that this is the example of shear bolt. And similarly, the I mean, when you study about steel structures or PRC, plane reinforced concrete structures, this is a similar concept like in those subjects also, कि जो हमारे पास shear stress apply हो रहा होता है beams में या columns में, तो that is, I mean, the main concept is similar. So ये आप लोगों को मतलब याद होना चाहिए what is how the shear acts and how the shear forces behaves. Okay, so as we have discussed before, that yeah, I mean, the shear forces acts parallel to the cut surface, and the total force we counteracts the total external force that is being applied on that material, which is called which we can calculate by this tau, shear force over that cross sectional area, which can be also inclined or a transverse cut, as we have done the examples before. And after that, सर स्क्रीन शेयर नहीं है सर क्या हुआ है? सॉरी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर लड़कों को स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही और लड़के कह रहे थे कि आप अगर उर्दू में समझा दे तो सर हमें सही समझ आ जाएगा। चले, मैं उर्दू में भी समझा देता हूँ, साथ साथ थोड़ा इंग्लिश, साथ साथ थोड़ा उर्दू में कर दूंगा। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी जी सर अभी हो रही है। अच्छा, तो ओके, मतलब हम लोगों ने जो प्रीवियसली बात की थी कि जो फोर्सेस हैं वो पैरेलल हैं इस सरफेस के अलोंग द, जो भी हमारे पास सेक्शन होगा, जो भी हम लोग हमारी बॉडी है, तो उसके जो पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑन द परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, वाइल द जो शेयर फोर्स है वो हमारे पैरेलल सरफेस एरिया के एक्ट करेगी. सो दैट इज़ वाई वी कॉल द शेयर फोर्स. ये आप लोग मतलब दिस इज जस्ट काइंड, हम लोग उसको बेसिक रिवाइज कर रहे हैं जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. तो उसके बाद हम लोग 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस पॉइंट में आ जाते हैं. हम लोग कोई भी इन्फिनिटेसिमल बहुत स्मॉल पॉइंट एक ब्लॉक ले लेते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में से, किसी भी बॉडी में से, कोई भी हमारे पास जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास मतलब कोई भी बॉडी है तो उसमें से हम लोग एक स्मॉल ब्लॉक ले लेंगे, एंड दैट इज बेसिकली आवर 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस. और जो हमारे पास इस पे जब फोर्सेस किस तरह एक्ट करेंगी, नॉर्मल फोर्स एंड देन शेयर फोर्स, वी हैव आई मीन डिस्कस दैट ऑल्सो बिफोर. सो उसके बाद जब हम लोग फोर्सेस अप्लाई करेंगे, एंड देन आफ्टर व्हाट वी कैन डू आफ्टर रिमूविंग ऑल द normal forces, we can have a pure 2D shear stresses which will be shear in x, y and yz, and which will be equal, these shear stresses will be equal by equilibrium. So that is our, I mean, previous part that we have discussed before. ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो मतलब it's just a kind of a revision. So let us move towards now shear strain. We have discussed about the normal stress and then normal strain. ओके, जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल्स भी की थी वो नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन के बारे आई मीन उसके मुताबिक थी. अब हम लोगों ने शेयर स्ट्रेस डिस्कस कर लिया, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स शेयर स्ट्रेन. ओके, so there is normal stress, normal strain, and then now shear stress and shear strain. So shear strain, what is shear strain basically? Okay, it's a change in angle between the reference axis or the angle between the side faces change. I mean, जो हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर हम लोग फोर्सेस अप्लाई करें तो डेफिनेटली इट विल काइंड ऑफ वो थोड़ा डिफॉर्म शेप में उसका एंगल चेंज हो जाएगा.
that angle change is basically what we can calculate is our shear angle or shear distortion or angular distortion. This all are terms for the shear strain, which is defined by this gamma. So again gamma, because it's a shear strain, again it's a dimensionless, ठीक है. तो but mostly we I mean because it's an angle, it have to be we can take it as a what you can say radians, or if we can also calculate in degrees. So बाकी अगर ये हमारे पास जैसे ब्लॉक है, उसको अगर हम लोग फोर्सेस अप्लाई करें, देन इट विल आई मीन दिस इज 90 डिग्री. वी कैन इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस बीट एंगल बीटा फ्रॉम दिस, वी कैन कैलकुलेट द shear strain in this block. Okay. So then again sign convention जो positive faces पर act कर रही हैं, that is basically our positive x direction shear force, positive y direction shear force, और जो positive I mean जो negative face पे act कर रही हैं, that will be our negative two negative faces पे जो act कर रही हैं, that will be our what you can call is negative shear stresses, sorry not forces, stresses. ठीक है. सो अगर आप देखें जो जहां ये जो बोथ एक्ट कर रही हैं, द एंगल इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन दिस केस. ओके. सो एट बोथ दिस पॉजिटिव angle is also reducing, and this is at this negative point the angle is also reducing, but यहाँ हमारे पास angle increase हो जाएगा, that will be beta plus this angle जो 90 से increase हो रहा है. So that's how we can calculate. I mean shear strain is basically the distortion, और जो angle में उसकी distortion आएगी, that is our basically the shear strain, which will be due to the shear stresses. Okay, shear stress which is acting parallel to those surfaces or parallel to that planar से face of the body. जो भी body की planar face होगी, उस पे जब force act हो रही होगी, then हम लोग उसका shear strain calculate करेंगे. सर Okay. जी. सर ये shear strain में हम खाली डिफॉर्मेशन निकाल रहे हैं ना, जी बट जी. नॉर्मल स्ट्रेन में तो हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन निकालते थे, यानी ओरिजिनल लेंथ से जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसका रेट क्या है. अब यहाँ पे तो खाली ये चेंज इन, मतलब ये खाली एंगल निकाल रहा है, बट नॉट चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एंगल. चेंज आई मीन जो आप अगर देखें ये चेंज जो ये 90 डिग्री है टोटल ना, जो उसमें चेंज आया दैट इज बेसिकली आवर shear strain. मतलब चेंज इन एंगल अगर आप देखें, वो जो अपना नॉर्मल स्ट्रेन है, उसमें हम लोग दैट इज जो उसमें अप्लाई कर रहे हैं हम लोग चेंज इन लेंथ ओवर द टोटल लेंथ. मतलब दैट इज अगर जब हम लोग shear stress और shear strain यूज करते हैं, तो व्हाट द मेन पॉइंट इज दैट इट रिमूव्स द ज्योमेट्री आउट ऑफ द बॉडी. सो हमारे पास सिर्फ जो मटेरियल की मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट व्हाट वी कैन कैलकुलेट. ठीक है. ओके. सो आई मीन अगेन दिस इज द साइन कन्वेंशन दैट वी कैन यूज. और कार्टेशियन प्लेन में अगर हम लोग सिमिलरली 3D बॉडी को देखें, विच इज़ अनडिफॉर्म्ड बॉडी, एंड देन वी हैव डिफॉर्म्ड बॉडी, देन वी कैन कैलकुलेट ओके यहाँ हमारे पास एंगल्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, यहाँ हमारे पास एंगल रिड्यूस हो रहे हैं, यहाँ हमारे पास एंगल रिड्यूस हो रहे हैं. सो दीज आर वी कैन कैलकुलेट आई मीन इन एक्स वाई डायरेक्शन, इन वाई जी डायरेक्शन, इन एक्स जी डायरेक्शन. सो दिस इज़ बेसिकली आवर आई मीन व्हाट यू कैन से. तो उसके अलॉन्ग अगर आप वो देखें, तो जो हमारे पास चेंज इन स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन है, दैट वी कैन आल्सो कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला. सो अगर और दूसरी पॉइंट ये है, द नॉर्मल स्ट्रेन कॉज द चेंज इन वॉल्यूम. ओके. द नॉर्मल स्ट्रेन है दैट इज अ चेंज इन वॉल्यूम. सो जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ओवर द ओरिजिनल लेंथ वाली, तो एंड इट ऑल्सो रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द आई मीन द थिकनेस ऑफ द बॉडी. अगर आपको वो टेंशन टेस्ट की जो वीडियो दिखाई थी, उसमें देखें जब जैसे ही वो फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं, नॉर्मल फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं, तो वो जो वॉल्यूम भी है उसका, दैट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग. सो नॉर्मल स्ट्रेन कॉजेज द चेंज इन द वॉल्यूम हाउ ऑफ अ रेक्टेंगुलर एलिमेंट, दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. और जो एंड द shear strain cause the change in its shape. Okay.
So it can I mean, this is not changing the volume, but however it is changing the angle, or changing the, I mean, at that position it is changing that shape of the body, not the volume. So that's what basically shear strain on a normal strain is. So let's do a few more examples. उससे I hope so आप लोगों को और clear हो जाएगा. So just you have to remember these four different I mean two stresses: shear stresses, normal stress, and then shear strain and normal strain. So which are connected to each other. And further definitely जो Poisson's ratio है, it can have उसके they both are interconnected. हम लोग we will see in the lecture today. Okay, so let us do example. First of all, the slender rod. These examples you can also find in a Hibbeler book. So try to solve it also yourself after the class. Okay, this cylinder rod shown in this figure. Okay, subjected to an increase of temperature along its axis, which creates a normal strain in the rod of, मतलब हम लोग कोई हमारे पास rod है जिसके ऊपर हम लोग जो उसके टेम्परेचर प्रॉपर्टीज है, दिस मस्ट बी, दिस इज एन एम्पेरिकल फार्मूला. सो उससे वो क्या बता रहा है कि जो जी डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, उसका ये एक फार्मूला है या उसकी एक ये फॉर्मेशन है. ठीक है, तो वेयर जी इज मेजर्ड इन मीटर्स, ठीक है, और मिलीमीटर्स. डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द बी, ठीक है, जो टेम्परेचर की वजह से ड्यू टू द टेम्परेचर इंक्रीज एंड द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन इन द रॉड. डेफिनेटली जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इलोंगेशन हो रही है, देयर इज काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ स्ट्रेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी. सो let me first try to solve. I mean, I will write it down, then I will explain. So just a little bit, be patient. Okay. So strain in Z, as given in question, is 40. Ten minus 3. This is the formula that they have given. So delta will be equal to, अभी हम लोगों ने change in this length find करना है. So as we have discussed before that it can be calculated in this way also. So अगर हम लोग change in length along the if we integrate that change in length in the from 0 to L for this whole length, we can calculate its I mean how much increase is happening in this rod. So this will be, because it is increasing only in Z direction, so we have to calculate only strain in Z direction. So this will be our this is constant, it will come out of the integration. And after integrating this, this will be equal to 2/3, एंड हम लोग पावर में ऐड करके उसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, देन जब डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा. तो दैट विल बी इक्वल टू Z 3/2. And we have to integrate from 0. So after calculating this, this will be equal to 0.00239 millimeters, which is equal to multiply by 1000 करेंगे तो वो मिलीमीटर में आ जाएगा, और approximately equal to 2.40 millimeter. Sorry, this is meters. So this is our strain in Z direction, and to calculate the average
strain. I mean, this is due to the temperature, and if we calculate the this is the delta, not the strain. Actually, this is delta. This is the delta, and so average strain will be equal to change in length. This change in length, 2.39 or 2.40 divided by 200 millimeters. This is millimeters. This is millimeters. So this will be equal to 0.0119. So this is actually our strain. Okay, so that's, I mean, we can calculate the strain in this rod. So okay class, I will explain you. हमारे पास जो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन में जो फार्मूला दिया हुआ है, जो टेम्परेचर चेंज की वजह से स्ट्रेन आ सकता है, उसमें हमारे पास वो ये दिया हुआ है. वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द डेल्टा. हम लोगों ने डेल्टा फाइंड करना है कि इस टेम्परेचर की वजह से रॉड कितना एक्सटेंड हुआ है या उसमें कितनी इलोंगेशन हुई है. तो इलोंगेशन हमारे पास किस डायरेक्शन में हो रही है? जी डायरेक्शन में. सो हम लोग उसको इस जो चेंज जो इसकी वजह से चेंज आ रही है, उसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये स्ट्रेन को हम लोग जब अलोंग द होल पार्ट ऑफ द बॉडी इंटीग्रेट करेंगे, वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा. आपको पार्ट समझ आ रही है? द पॉइंट इज कि अगर हमारे पास ये एक रॉड है जिसकी लेंथ सपोज 1 मीटर है या 1000 मिलीमीटर है, उसको जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे अक्रॉस होल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ईच मिलीमीटर पे, देन वी कैन इंटीग्रेट दैट पार्ट. और जो सारे जो ऑल द स्ट्रेन इन दैट पार्ट विल बी इक्वल टू द होल डेल्टा जो हमारे पास रॉड के अंदर होगा. आफ्टर कैलकुलेटिंग द डेल्टा वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्ट्रेन and which is as we have done before, actual change in length divided by its original length. Okay, so this is the answer 0.0119. Okay, so ये काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें. कोशिश कीजिए, कोशिश करा करें कि मेरे साथ सॉल्व कर लिया करें, तो आप लोगों के नोट्स भी बन जाएंगे और प्रॉपर इट विल बी ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू गाइस टू. तो ओके, सो लेट अस डू, सॉरी. Okay, example 2. Okay, when the force P is applied to a rigid, this is a rigid body, okay, rigid lever arm ABC. This is A, B, and C. This whole rigid arm in figure this. Okay, the arm rotates counterclockwise, so it's rotating in this direction. Okay, the arm is rotating in this direction at about a pin A. This is our pin connection A through the angle of 0.05 degrees. So determine the normal strain developed in the wire. First of all, we have to calculate this strain in this wire. Okay. Okay. So this is, so okay. In this question, first of all, we have to draw the diagram. We can make a free body diagram first of all. Let me choose this one. हमारे पास यहाँ so this is kind of a figure जहाँ force P apply हो रही है, and this is rotating in this direction. तो ये वाली हम that what we have to first of all calculate, which is delta.
this is, we can say, B dash. So if this is B, this can be B dash. जो हमारे पास एंगल दिया है which is 0.05 degrees, and this is 400 millimeters. This is 300 millimeter. Okay, so we have to calculate this is D and this is C, B and A. So हम लोगों ने we have to calculate the normal strain in this rod BD. So first of all हम लोग ये angle calculate करेंगे, ठीक है? How we can calculate? We have this dimension which is 400. So 400 tan. This will be, suppose this, let's say it's alpha. So alpha will be equal to tan inverse 400 divided by 300. So this angle is equal to 53.1301 degrees. Now हम लोग को पता है this ये यहाँ से लेके ये 90 degrees है, total 90 degrees है. So we can calculate this angle which will be equal to, जो हमारे पास ये total angle है, let's say it what beta. So no, beta is already CP. Okay, let's say it beta. So जो एंगल बीटा है वो कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा माइनस प्लस 0.05 जो इसका वो जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. सो दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस 53.1301 प्लस. सो जो हमारे पास ये एंगल बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 36.92 degrees. सर एक्सक्यूज मी, ये अल्फा एंगल जी बोलो. अल्फा एंगल सर किसके दरमियान बन रहा है वो सर? ये जो लाइन आपने खींच लिया हिपोटेनस की तरह ए और डी के दरमियान, सर ये तो फिगर में शो नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ये वाली बॉडी तो रिजिड है, ठीक है, ये तो 400 ही रहेगी. जो चेंज आ रहा है वो इस रॉड के अंदर आ रहा है जो 300 मिलीमीटर है, ठीक है. तो हम लोगों ने ये जो अल्फा एंगल कैलकुलेट किया है, अगर हम लोग मतलब बिफोर द एप्लीकेशन इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी, जो हमारे पास ये वाला एंगल है दैट इज अल्फा. ओके, सो अल्फा हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं? वी हैव आई मीन बेस ओवर हाइपोटेनियस. सो बेस ओवर opposite over base, so we can calculate the alpha angle which is 53 point. ये वाला एंगल जो है हमारे पास, ये वाला अल्फा एंगल है, ठीक है. टोटल हम लोगों को पता था बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड दिस इज 90 डिग्री, ठीक है. जब लोड अप्लाई किया है तो जो चेंज इन एंगल आया है विद दिस इज 0.05 डिग्रीज, ठीक है. तो हम लोगों को एक एंगल पता लग गया जो हमारे पास है 53.130. जो रिमेनिंग एंगल है ये वाला पार्ट जो है उसको वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो 90 माइनस दिस, हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा प्लस 0.05. तो हम लोगों के पास ये जो बीटा एंगल है, वी कैन कैलकुलेट दिस बीटा एंगल, ठीक है. सही है सर, थैंक यू. ओके, चलिए ठीक है. तो I mean try to solve using both the methods, so आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. नाउ अब हम लोग पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कैलकुलेट कि जो ये लेंथ थी दैट विल बी इक्वल टू सिंपली यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. जो ए डी लेंथ ए डी है, दिस विल बी इक्वल टू 500 मिलीमीटर. ओके, और जो अब हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास ये लेंथ आ गया, ये एंगल है और ये लेंथ है. तो जब हमारे पास 2 लेंथ्स हों और 1 एंगल हो, व्हाट वी कैन कैलकुलेट द एनी थर्ड लेंथ either using the angle or we can use the cosine formula, ठीक है, या लॉ ऑफ कोसाइन जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है. सो
we can calculate this total sorry it's a mess because तो ये हम लोग हमारे पास ये वाला लेंथ है ये वाली लेंथ है we can calculate because this is not 90 degree so we can calculate using the cosine law which is this is dash okay I mean I am calculating from D to not B actually B dash ठीक है मैं D से B dash तक का लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ length 1 square plus length 2 square minus 2 into length 1 into length 2 into cos of this angle which is 36.92 so ये आप calculate करें this will be equal to okay I'm writing this here length B dash D will be equal to 300.391 so the change in length we can calculate now ठीक है हमारे पास ये टोटल लेंथ आ गई हम लोग को पता था ये लेंथ हमारे पास 300 है सो 300 माइनस दिस लेंथ माइनस 300 हमारे पास ये चेंज इन लेंथ आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 0.0391 ओके आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो एक सेकंड में आगे विट भी है सर जी सर यहाँ पे जो आपने ए बी डैश लेंथ को 400 पुट किया ये तो लेस देन 400 नहीं होगा क्योंकि वो रोटेट हो गया 0.05 डिग्री जो लेंथ ए बी है ए बी डैश सॉरी वो तो सेम रहेगा बिकॉज क्यों क्योंकि वो तो रिजिड है ना मतलब अगर आप खुद सोचें ये सपोज सॉरी ये जो ये लेंथ है टेक इट एज अ स्प्रिंग ठीक है ये लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती ये लेंथ तो रिजिड है ठीक है दिस इज यू सी रिजिड लिवर आर्म सो दिस लेंथ इज नॉट इंक्रीजिंग जो लेंथ इंक्रीज होगी वो ये वाली होगी okay all right so जी सर oh sorry I hope आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया now we can now what we can calculate strain which is BD so change in length is 0.34 it's okay. so 300.3491 minus 300 over original length is 300 so हमारे पास जो strain आ रहा है that is basically equal to 0.00116 millimeter by millimeter or it's just a strain okay so you can solve this question by using this method also another method is simply because if you see आप ये बोल रहे हैं ना कि हमारे पास ये एंगल दिया है 0.05 और जो हम लोगों ने ये पार्ट फाइंड करना है ठीक है दिस इज आवर डेल्टा लेंथ इन BD ठीक है सो you can use any method ठीक है उसमें कोई वो नहीं है और अगर आप लोग को याद हो जब for small angles किसी भी अगर हमारे पास ये थीटा दिया है और हम लोगों ने ये फाइंड किया ये लेंथ फाइंड करनी है so that will be equal to L length is equal to R theta okay so but remember this जो theta है हमारे पास जो angle है that should be in radians okay so this length or arc length will be equal to theta into simply we can we have this length AB okay
which is 400. To convert this, because this is in degrees, so we can simply just write 0.05 divided by 180 multiplied by pi. So this will convert the angle into degrees multiplied with 400. So जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे इसका, अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो अगर सॉल्व करें तो ये सेम एंगल आ रहा है, सेम सॉरी इलोंगेशन आ रही है, which is 3491 millimeter. And then again you can similarly calculate the strain in BD. Okay, so I mean you can solve a problem anyway, but ये दो solutions हैं. अब अगर आप ये देखेंगे ये solution, it's much more easier and it's I mean छोटा भी काफ़ी है, तो we can easily solve by this solution also. It doesn't matter how you solve, but the point is कि आपका जो result है वो same होना चाहिए या I mean correct होना चाहिए. Okay, so now let us calculate the average normal strain wire BC. It's a similar kind of question. ये आप लोग solve करें. Average strain. Simply we can calculate the, अगर हमारे पास ये body इस तरह है, and हम लोग इसको इस तरफ push कर रहे हैं, तो it will become something like this. ठीक है. So all we have to calculate is just this average strain, which I told you we can calculate by radians, multiply with its length, which is this length 0.5 meters divided by its original length, this 0 points. Okay, so now let us move and do few examples of shear strain. Okay, the plate is deformed into the dashed shape. Okay, this plane is deformed into this dashed shape. Okay, if this deformed shape horizontal lines on the plate remain horizontal, that means this both are remains horizontal and do not change their length. Determine the average normal strain alongside AB. Alongside AB जो ये normal I mean strain occur कर रहा है, ठीक है, which is actually it's given in this part, but we can calculate also that. And the average shear strain in the plate relative to the axis x and y axis. Okay, so we have to calculate this angle also, which will be our shear strain, and we have to calculate this change in length, which is 2 millimeter, but we can, I mean, we have to calculate in this figure. This is I copied the wrong figure, so okay. First of all, let's do the part A. AB is equal to simply the Pythagoras theorem. We have to actually calculate this height, okay?
Oh, no, we have to calculate the normal. Sorry, we are uniform shape. Average normal strain. Okay, along the side AB. So we have this length and -2 we have this length. We can calculate this thing. Okay, so angle this length AB dash, this is our A, this is B, this is B dash. So this will be equal to 250 minus 2 square plus 3 square. This will be equal to 248.018 millimeter. So what we just did, हमारे पास ये थी, ये this length and we have this length. So we calculate our this length. ठीक है? So our strain average will be equal to AB dash minus AB over its original length, which is AB. So this will be equal to, kindly अपनी videos बंद कर दें. Okay, thank you. So this will be 248.018 minus 250 divided by 250. This will be equal to minus, because it's compressing, so that's why it's minus 7.93 into 10 raised to power minus 3. This is our string. और दूसरा पार्ट, और दूसरा किस तरह कर सकते हैं हम लोग? अगर हम लोगों ने सिंपली, आई मीन दिस इज द एक्यूरेट पार्ट, बट अगर हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट फाइंड करना है तो सिंपली वी नो दैट द जो हमारे पास change in length है that is 2 millimeter and total length is 250, so we can calculate by that also. Okay, which जो approximately same है, which is sorry 0.08 or 0.008, which is almost close to this one. Now part 2. Part B is we have to calculate the shear strain in X and Y direction, in X and Y plane. So first of all, let us we have to calculate the angle, which will be equal to tan shear strain 3. This हमारे पास ये लेंथ भी आ जाएगी. ठीक है, तो द shear strain will be equal to, अगर हम लोग इसका इन्वर्स लेंगे, we can calculate that should be in radians 0.0121 radians. ठीक है, और सिमिलरली अगर हम लोगों ने उसी तरह कैलकुलेट करना है तो देन इट विल बी इक्वल टू जो हमारे पास, बिकॉज फॉर स्मॉलर एंगल अगर हम लोग tan यूज करें ना करें तो इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सेम. सो वी कैन जस्ट डू बाय लाइक दिस. जैसे हम लोगों ने L इक्वल टू r थीटा किया था, सो वी कन्वर्टेड इनटू रेडियंस. तो इसी तरह अगर हम लोग tan हटा भी दें, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.012 रेडियंस. सो दिस इज आवर shear strain. So okay, this is another example of shear strain and normal strain. So I hope so आप लोग को ये भी समझ आ गई होगी. These are not very difficult questions, but I mean they are important for your basic concepts of shear stress and shear strain. So
So similarly इसी तरह का जो दूसरी एग्जांपल है, the plate shown in figure is fixed connected along AB. Okay, this body is fixed at this position and held by the horizontal guides at top and bottom AD and BC. So at AD and BC it is also somewhat fixed, so it can move only in this direction. If its right side CD is given a uniform horizontal displacement of 2 millimeter. So there is a displacement of 2 millimeter in this direction, which is now increasing this length. Okay, along 2 millimeter. Determine the average normal strain along AC. So we have to calculate the normal strain along this diagonal part AC and the shear strain at point E relative to the axis x and y axis. I mean, similarly we can take this x and y axis. So we have to calculate the change in now. That's the point that I was explaining कि हम लोग now हमारे पास जो axis of interest है वो कौन से हैं, this x and y axis, not the horizontal part but in this diagonal portion. So we have to calculate the change in angle in this axis, and we have to calculate the average normal strain in the diagonal part also, AC, that is AC. Okay, so आप सब लोगों ने ये previous question note down कर लिया होगा. Okay, so let us start this. I wanted you guys to do this, but I think so time थोड़ा कम है, so let us start. First we have to calculate this AC. Again we can calculate simply by using the Pythagoras theorem. So AC equal to 150 square plus 150 square, which will be equal to, अगर आप ये calculate करें then it will be equal to 212.13 क्या 212.13. and now we have to calculate this diagonal part which is AC dash. मतलब हमारे पास अभी ये इंक्रीज हो गया, सो डेफिनेटली जो लाइन है वो थोड़ी सी, मतलब ये अभी 2 मिलीमीटर इंक्रीज हुए, तो अगर ये आप लाइन जो ये वाली लाइन है ये थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है, जो चेंज आ जाएगा उसमें. सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट ऑल्सो. सो वो भी सिंपली हम लोग वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द पाइथागोरस. इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द आई मीन जो ये वाली लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही, और एल्स वी हैव टू यूज कोसाइन और अदर साइन फार्मूला और कोसाइन लॉ. सो हमारे पास ये 90 डिग्री में, सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं. तो एक साइड हमारे पास डेफिनेटली दिस साइड इज 150 and then the other side is हमारे पास कितना इंक्रीमेंट हुआ है 2 मिलीमीटर का, so that will be equal to 150. so 215.55. 200 and इसका जो आंसर आ रहा है 213.55 millimeters. Okay, so now we know this AC and AC dash, so simply we can calculate the normal strain, which will be this minus this and divided by the original length. So 213.55 minus 212.13 divided by 212.13. So the answer is 0.00669 millimeter by millimeter. So it's approximately same. We can take it 0.007 or 0.0067. So now to calculate the shear strain. So
इसमें अगर आप फिगर देखें तो हमारे पास अब फिगर इस तरह हो जाएगी, दिस इज़ अ लिटिल बिट एक्सटेंडेड, ठीक है। तो जो हमारे पास ये वाला पार्ट दिया हुआ है, we can divide it into two, 76 millimeters, 76 millimeter, and this will be equal to 75 millimeter and 75 millimeter. So हमारे पास जो diagonals हैं वो ये हो जाएंगे, and we have to calculate this angle theta. ये I mean I've just divided 152 into two parts and 152 into two parts and 150 into two parts. So हम लोगों ने ये एंगल अब कैलकुलेट करना है, विच विल बी अगेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, बिकॉज अगर ये जब 150 और 150 था देन इट इज़ 90, सो नाउ इट हैज़ चेंज्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो tan थीटा इधर यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट, सो okay we can we divide by 2, sorry, let me just check it the answer. सर थीटा वो दूसरा नहीं होगा, क्या हुआ, ये जो 90 डिग्री है ना अपने आप थीटा डैश की बने। नहीं ये थीटा डैश इसलिए हो गया क्योंकि अगर देखो जब ये 150 और 150 था देन द एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। जब ये 150 और 150 था, जब ये 152 हो गया है, ये अब 152 है टोटल, तो हमारे पास एंगल चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है जो चेंज इन एंगल आया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स थीटा डैश। सो हम लोग अगर ये वाला पार्ट लें सिर्फ, सॉरी इट्स लिटिल मिस, अगर हम लोग then it will be equal to tan theta dash by 2 is equal to 76 divided by 75, ठीक है। 75 divided by 76 divided by 75, then we can calculate this angle, so theta will be equal to 90.759 degrees, and then we have to convert definitely into radians, so pi over 180 to convert it into radians, 90.759, so this will be equal to 1.5840 radians, ठीक है। ये थीटा डैश आ गया, एंड shear strain as we have discussed before is equal to pi by 2 minus this theta dash, so that will be equal to minus 0.0132 radians. So this is our shear strain in along the, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x है, ठीक है। सो दिस जो चेंज इन एंगल आया है बिकॉज ऑफ द आई मीन जो हम लोगों ने ये जो इंक्रीज किए थे, यहाँ हम लोगों ने जो इंक्रीज किया पार्ट, उसकी वजह से जो चेंज इन एंगल आया है, तो दैट इज बेसिकली आवर shear strain in x and y direction, minus 90 minus that total angle will give us the change in angle, so that is our shear strain, ठीक है। सर ये माइनस क्यों लगा एंगल के साथ आखिर में? ओके सो हमारे पास जो टोटल एंगल था वो 90 था, तो इसकी वजह से अगर आप देखें तो ये वाला एंगल है, इसमें जो चेंज आ रहा है वो मतलब ये वाला एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एंगल। सो जो स्ट्रेन है वो आई मीन जो चेंज है वो हमारा 90 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोगों ने इसमें से माइनस कर दिया है, ठीक है। अगर हमारे पास जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में था, जो मतलब अगर हमारे पास एंगल स्मॉल होगा तो हमारे पास वो उसमें से
मतलब अगर बीटा 90 से स्मॉल होगा तो डेफिनेटली जो एंगल है वो कम आएगा, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस। सो ओके क्लास, जिस ये जो हम लोगों ने अभी शीयर स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल सर ये स्ट्रेन, लास्ट स्टेप समझ नहीं आया सर। ये शीयर स्ट्रेन का, यस सर, लास्ट स्टेप। ओके मैं दोबारा समझा देता हूँ। अभी हम लोग मतलब जो हमारे पास जब बॉडी डिफॉर्म हुई है, यानी कि ये वाला पार्ट जो इसका इंक्रीज हुआ है, मतलब ये स्मॉल जो 2 मिलीमीटर इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से जो ये वाली जो एक्स और वाई जो 90 डिग्रीज पे थे, वो एंगल चेंज हो गया है, ठीक है। हम लोगों ने वो बेसिकली कैलकुलेट करना है। अगर आप देखें ये क्वेश्चन में बोलता है शीयर स्ट्रेन एट ई रिलेटिव टू एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, ये जो एंगल है अभी ये 90 है, जब ये एक्सटेंड हो गया तो डेफिनेटली ये एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो ये एंगल चेंज हो गया है, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि ये एंगल कितना है, और इसका जो 90 में से मतलब अगर डेफिनेटली अब ये एक्सटेंड बढ़ रहा है तो वो चेंज कितना आ रहा है, सो वी कैन कैलकुलेट दैट, ठीक है। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, वी सिंपली जस्ट वी कैन कैलकुलेट थीटा बाय टेकिंग, आई मीन सिंपली इधर बाय दिस, और वी कैन टेक दिस पार्ट ऑल्सो। उसके लिए हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, टेन इतने पार्ट का हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास ये सपोज बेस दी हुई है और उसके ऑपोजिट दिया हुआ है, सो उसके लिए वी कैन कैलकुलेट द टाइम यूजिंग द टेन एंगल। टेन इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास ये टोटल एंगल आ जाएगा विच इज़ 90.759, विच इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम द 90 डिग्रीज, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट इसको मैंने तो इसको भी रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया ना, या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 90 माइनस दिस एंगल, ये आपका डिग्रीज में आ जाएगा, और देन यू कैन कन्वर्ट इनटू रेडियंस, और देन और एल्स जिस तरह मैंने किया है पहले रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू रेडियंस तो मैंने उसमें से पाई बाय टू इज बेसिकली आई मीन 90 डिग्रीज, ठीक है। इन रेडियंस इज पाई बाय टू, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट द हमारे पास जो टोटल लेंथ आई है, टोटल एंगल आया है, सो जो और चेंज जब उसमें से माइनस करेंगे तो चेंज आ जाएगा, देन चेंज इज इक्वल टू आवर शीयर स्ट्रेन, ठीक है। जो जैसे हम लोगों ने एंगल डिस्टॉर्शन जो बात की थी प्रीवियसली, जो चेंज इन एंगल है दैट इज आवर बेसिकली शीयर स्ट्रेन, सो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। समझ आया आपको? यस सर। ओके, सो ये मैम इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि डिटरमाइन द रिएक्शन फोर्सेस एट ए वाई एट पॉइंट ए एंड सी एक्स एंड सी वाई एट पॉइंट एंड, जो हमारे पास दूसरा वो पार्ट है, यू हैव टू कैलकुलेट दैट, ठीक है ना। सो अगर इसमें हम लोग सिंपली हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो क्या दी हुई हैं, this is A, this is D, this is B, this is E, and this is C. Okay, this is 25 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। यहाँ हमारे पास पॉइंट E पे दी हुई है 15 किलोन्यूटन। सो पार्ट ए में वो क्या बोलता है, वी हैव टू कैलकुलेट ए वाई। सो अगर हम लोग देखें हमारे पास रिएक्शन कितने होते हैं, 3, ठीक है। तो वी कैन टेक समेशन ऑफ मोमेंट्स एट बी इक्वल टू 0। अब ये अब सारे कैलकुलेट कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू Yes. हाफ इंटू ये टोटल, मतलब जो टोटल इसकी एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 25 इंटू दिस इज टोटल इज 4, 4 4 ठीक है, 4, 4 by ठीक है। ओके, सो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 by 3 हो जाएगा। जी, 50 मल्टीप्लाई विथ 4/3, ठीक है।
और माइनस ए वाई इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया समीशन एट एम बी इज इक्वल टू 0। देन ए वाई वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस। ठीक है, सिंपली बाय जस्ट मूविंग दिस थिंग टू द अदर पार्ट। सो इसको इस पूरे पार्ट को उधर ले जाएं, देन दिस विल बी इक्वल टू डिवाइड बाय 4। ठीक है, if you calculate this you can simply calculate ay, which is 16.67 kilonewton. Okay, so now if we calculate the summation at b fx is equal to, अच्छा अभी इसमें fx क्या होगा, सॉरी bx क्या होगा, X के साथ हाँ जीरो बी एक्स जीरो होगा सर। 0 होगा। हम्म, ठीक है, एंड देन by will be equal to, अगर हमारे पास ई एफ एक्स ये वाली इक्विलिब्रियम कंडीशंस सेटिस्फाई करें तो क्या होगा, बी वाई। तो टोटल हमारे पास जो लोड लग रहा है वो कितना है, 50। 50 माइनस 16.67 सर ये 33 पॉइंट कितना है? एग्जैक्टली सर 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इज इक्वल टू 33.33 किलो। 33। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन सी एक्स इज इक्वल टू, सी एक्स क्या होगा हमारे पास, 0 0 इज इक्वल टू 0, देन सी वाई इज इक्वल टू, अब सी वाई में क्या क्या ऐड करेंगे, दिस इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट है और ये आप लोगों को मतलब आना चाहिए। सी वाई विल बी इक्वल टू 15 प्लस और कौन सी फोर्सेस लगी, 33.33। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 48.3 किलोन्यूटन। ठीक है, 48 पॉइंट कितना आ रहा है, 40, हाँ ओके 48.3 किलोन्यूटन। सही है, अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द समीशन एट mc is equal to 0. so to calculate the moment at c, अभी हमारे पास क्या नहीं है, we have this force, we have the angle। ठीक है, so कितना हो जाएगा, 15 into 1.5 meters, ये सिर्फ रोटेट कर रही है तो देन प्लस ये वाला भी एंगल उस तरफ रोटेट कर रहा है, सो दैट विल बी इक्वल टू 33.1.5 plus 1.5 is equal to 3, sorry 33.3 multiply with 3, so this will be equal to 15.15 plus 50, this is equal to approximately 122.5 kilonewton meters। ठीक है, so this is your moment at mc। अब समझ आ गया, now you can calculate the rest of the parts। सही है सर। ठीक है, इसी तरह आपने d पे कैलकुलेट करना है, f x इज इक्वल टू 0, f y इज इक्वल टू 0 और m d इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट एट e, e f x इज इक्वल टू 0, if y इज इक्वल टू 0 एंड e f। और जब आप फाइनली वो कैलकुलेट कर लेंगे तो देन आई मीन यू कैन सिंपली कैलकुलेट द मोमेंट्स एंड फोर्सेस। ठीक है, सही है सर। तो ओके आप लोग ट्राई टू सॉल्व एंड देन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व दिस असाइनमेंट्स, बट पहले आप लोग सॉल्व करके मुझे सेंड करें सो दैट आई कैन चेक।